Hello guys, as we all know that it is a very difficult time for all of us. So be at home and stay safe from the coronavirus. So yesterday I have received a request from one of my students to deliver a lecture on function in C programming. So that's why I am recording this lecture, and this lecture will be in Hindi and English, or we can say English, for my students. So let's get started with the function in C programming. So function is a user defined block of statements that perform a repeated task of some kind. Now question arises, why we use function, or what is the need of function in C programming. So I will explain this in the Turbo C++ compiler, because all of my students are using Turbo C++ compiler on Windows. So let's get started with the Turbo C++ compiler. So let's open it. So guys, I have written a code to demonstrate the need of function in C programming. So these are the two header files, stdio and conio.h, and this is our main function, and we have declared a variable I, and that is of integer type. और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं CLR function to clear the console, and now we are using this for loop, एंड ये जो फॉर लूप है ये हमें एक रो प्रिंट करके देगा जिसमें 5 एस्ट्रिस्क होंगे, ठीक है. एंड देन इट विल प्रिंट हेलो, एंड देन इट विल अगेन प्रिंट ए रो ऑफ 5 एस्ट्रिस्क हेयर, एंड देन इट विल प्रिंट अरविंद. और अगर हम यहाँ पे देखें, फिर हम लोग यहाँ पर सेम कोड को रिपीट कर रहे हैं, एंड देन हमें एक स्टेटमेंट और मिलने वाला है यहाँ पर खारवाल, एंड देन again we are printing a row of 5 asterisk. So if I run this program, I will get the output like this. Okay, so now what is the problem with this code? अब इस प्रोग्राम के साथ या इस कोड में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर आप ध्यान से देखें कि हम लोग ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, जो फॉर लूप है और फॉर लूप के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है, हम इसको 4 टाइम रिपीट कर रहे हैं. दिस इज सेकेंड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम, एंड दिस इज फोर्थ टाइम. सो हम इस तरह की स्टाइल को अच्छा नहीं समझते हैं. ओके, तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इन दोनों लाइंस को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी फंक्शन से, ओके, तो वो बेटर अप्रोच होगी. उसका बेनिफिट क्या होगा कि हम लोग उसको केवल एक बार ही लिखेंगे अपने कोड में, ठीक है. उसको कैसे लिखेंगे, कैसे हम लिखते हैं, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा. तो अभी मैं आपको बता रहा था कि हम उसको यूज़ क्यों करते हैं. तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हमें यहाँ पर कोड रिपीटिशन नहीं होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में कर रहे हैं. तो इसका मेन रीज़न यही है फंक्शन का, कि अगर कोड रिपीटिशन से आपको बचना हो तब आपको यूज़ करना चाहिए फंक्शन, ठीक है, जो कि हम इस प्रोग्राम को करेंगे फंक्शन की हेल्प से. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. So guys, our next topic is types of function. So let's go ahead and we'll discuss it. So there are two types of functions are available in C programming. So first one is library function, which is also known as built-in function or system defined functions, and second one is user defined function. So let's discuss one by one. So guys, our next topic is library or system defined functions. So the library functions are provided by a system and stored in the library, so that's why it is called library functions. So example of library functions are scanf, printf, getch, clr functions. So if you want to use these functions, then you just need to include the appropriate C header files. So for example, if you want to use scanf and printf in your C program, then you need to include stdio.h header file, and if you want to use clr function or getcs function, then you will just need to include the conio.h header file. Okay, I hope it is clear to you. Now moving on to next topic, and that is user defined function. So these functions are defined by the user at the time of program. So guys, now moving on to next topic, and that is parts of function.
So let's go ahead and we'll discuss it. So there are three parts of function in C program. First one is function declaration, second one is function calling, and third one is function definition. So let's discuss one by one. So our first topic is function declaration, and here it is the syntax for function declaration. So this is data type, basically it is a return type, and here it is the function name and the argument. So arguments are optional, and I have also given an example for you for function declaration. So this is int sum, and there is no parameter in this function. So this function will return integer value because we have mentioned int here as a return type. If the return type of this function is void, then function will not return any value, and function always returns a value, and function can return only one value. This is important for you. I'm repeating it. So function always returns a value, and function can return only one value at a time. Function declaration should be global, means function should be declared outside the main function. ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ उसको हिंदी में भी। अभी हम अगर इस प्रोग्राम इस फंक्शन को देखें तो हमारा जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर वॉइड कर दें तो अब हमारा ये जो सम फंक्शन है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, और फंक्शन ऑलवेज रिटर्न से वैल्यू, हम फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, और वो केवल एक ही वैल्यू रिटर्न करता है एट ए टाइम। ओके, और फंक्शन डिक्लेरेशन होगा कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन ग्लोबली होता है, और ग्लोबली मीन्स कि आउटसाइड मेन, और सी के अकॉर्डिंग, सी के स्टाइल में हम लोग इसको हेडर फाइल्स के बाद में और मेन फंक्शन के ऊपर इसको हम डिक्लेयर करते हैं, जो स्टाइल है सी प्रोग्रामिंग की। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. So now guys, moving on to next topic, and that is function calling. So let's go ahead and we'll discuss it. So guys, here is the syntax of function calling, function name and arguments, and obviously arguments are optional here. So I have taken an example for you, sum and semicolon. So there is no arguments in this function, कि कोई भी आर्गुमेंट इस सम फंक्शन में नहीं है। ओके, अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस फंक्शन कॉलिंग को हम यूज़ कहाँ करेंगे। ओके, सो द फंक्शन कॉलिंग विल बी हेल्ड इन मेन फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन कॉलिंग होगी वो मेन फंक्शन में होगी। क्लियर है? फंक्शन डिक्लेरेशन कहाँ पर हुआ था, वो मेन से बाहर हुआ था, हेडर फाइल के बाद में, और मेन से बाहर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था। ओके, और फंक्शन कॉलिंग कहाँ होगी, फंक्शन कॉलिंग होगी मेन फंक्शन के अंदर। ओके, सो दैट्स वाई मेन फंक्शन इज नोन एज कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, कि मेन फंक्शन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉलिंग फंक्शन, और जो सम फंक्शन है उसको हम कहेंगे कॉल्ड फंक्शन। ओके, सो मेन फंक्शन इज नोन एज कॉलिंग फंक्शन एंड सम फंक्शन इज नोन एज कॉल्ड फंक्शन। Okay, so I hope it is clear to you. So guys, now moving on to next topic, and that is function definition. So let's go ahead and we'll discuss it. So here is the syntax of function definition. So data type, so data type भी वही होगा जो आपने function declaration के टाइम पे किया था। ठीक है, वहाँ पे था data type, function name and arguments, okay, and then semicolon था। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि function definition आप कर रहे हैं, जब आप फंक्शन का नेम देंगे तो यहाँ पर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ डेफिनेशन। ठीक है, मैं इसको वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे डेटा टाइप, और डेटा टाइप वही होगा जो डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने यूज़ किया होगा। ओके, द सेम फंक्शन नेम विल बी यूज्ड एंड आर्गुमेंट्स आर ऑब्वियसली ऑप्शनल, एंड हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस फंक्शन डेफिनेशन को आप यूज़ कहाँ करेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे। तो ऑब्वियसली फंक्शन डेफिनेशन भी आउटसाइड द मेन फंक्शन होगा, यानी ग्लोबली आप डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, एक रूल ये भी है कि हम एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमें ये फंक्शन जो है वो कहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, वो डिफाइन करना पड़ेगा हमें आउटसाइड मेन, यानी ग्लोबली। और सी स्टाइल के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन जो होती है, इसकी जो लोकेशन होती है, वो होती है मेन फंक्शन के बाद। So thank you so much guys for watching this video, and just in case you liked it, please do not forget to like and subscribe, and thank you so much.